Assalamu alaikum everyone. My name is Hafsa and I'm an ambassador at Dynamic Law Association. Today the topic I'll be discussing is jurisprudence, its meaning, scope and school of thought. First, let's have a look at the meaning of jurisprudence. The word jurisprudence is derived from Latin word jurisprudentia, in which juris means law and prudentia means skill or knowledge. So collectively jurisprudence means knowledge and skill of law. Jurisprudence is defined by different jurists, as Sir John Sullivan defined jurisprudence so as to be understood in two senses, one wide and the other narrow. In its wide sense, he defined it as the science of civil law. जैसे कि हमें पता है सिविल लॉ स्टेट लॉ होते हैं, तो इस सेंस में जुरिस्प्रूडेंस हमारे पास 3 डिवीजन में क्लासीफाई हो सकता है. नंबर 1 है एक्सपोजिटिव, जिसमें हमारे पास एक्सप्लेन किया जाता है लीगल राइटिंग्स को, प्रोविजंस को, मतलब लीगल एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं. सेकेंड है हमारे पास हिस्टोरिकल, नाम से ही पता है कि हिस्ट्री के बारे में कहा गया, जैसे कि हमारे पास एक लॉ कैसे एग्जिस्टेंस में आया, उसके पीछे उसकी क्या हिस्ट्री थी. थर्ड है हमारे पास क्रिटिकल, इसमें हमारे पास बताया गया है कि एक लॉ कैसा होना चाहिए, एक लॉ कैसा है और कैसा होना चाहिए. तो ये तीनों जो हमारे पास डिविजन्स है ये हमारे पास वाइड सेंस में आते हैं. अब हमारे पास नैरो सेंस इस डेफिनेशन की ये बनती है कि जुरिस्प्रूडेंस जो है हमारे पास सिर्फ लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है. तो ये सर जॉन सलमन की डेफिनेशन थी और उसके एक वाइड सेंस भी था और एक नैरो सेंस भी बनता था. ऐसे हमारे पास बहुत सारे और जूरिस्ट ने भी डेफिनेशन दी जुरिस्प्रूडेंस के बारे में, जैसे कि जॉन ऑस्टिन है. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस. He calls jurisprudence as the philosophy of positive law. By the term positive law, he meant just positivism, that is, law laid down by a political superior for commanding obedience from his subjects. अब यहाँ पे हमारे पास positive law का term यूज़ किया गया. ये positive law हम further detail में analytical jurisprudence में पढ़ेंगे. He preferred to divide jurisprudence into two parts. Number 1 is general jurisprudence, in which it examines fundamental principles and concepts of law, explores the nature, purpose, and scope of law, investigates underlying values and theories and philosophies. The second one is particular jurisprudence. It deals with specific legal systems, laws, or institutions. It examines concrete rules and regulations and practices. It focuses on local, national, or regional legal frameworks. Now let's move toward the scope of jurisprudence. As jurisprudence is the study of law and its principle, covering various aspects including what law is, its purpose, sources, relationship with morality and politics, comparisons with other laws, historical development, and social impact. It examines how law interacts with society, governance, and ethics, helping us understand law underlying principles. अब तक हमें जुरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसका स्कोप, उसके बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम आते हैं स्कूल ऑफ थॉट की तरफ. जुरिस्प्रूडेंस जो है उसके 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. नंबर 1 है एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस, नंबर 2 है हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस एंड थर्ड है एथिकल जुरिस्प्रूडेंस. तो नंबर फर्स्ट एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस को पहले पढ़ते हैं. एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस एनालिसिस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिविल लॉ. जैसे हमने जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसने बोला था कि जुरिस्प्रूडेंस हमारे पास फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है. तो अब हम एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस में पॉजिटिव लॉ को पढ़ेंगे कि पॉजिटिव लॉ हमारे पास क्या है और किसने डिराइव किया था. Austin is considered to be the father of English jurisprudence. He confined his study only to the positive law and applied analytical method for this purpose. Austin described positive law as the aggregate of rules set by men as politically superior to men as politically inferior subjects. He attributes sovereignty, command, duty, and sanction. अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव लॉ का बताया गया है. ऑस्टिन ने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया है कि हमारे पास एक सॉवरेन पर्सनैलिटी होती है, एक पर्सन होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, तो वो कमांड करता है. देन हमारी ड्यूटी होती है कि हम उस कमांड को पूरा करें. लेकिन अगर हमने उस कमांड को पूरा ना किया तो हमें सैंक्शंस दिए, हम पे सैंक्शंस लागू हो जाएंगे. सैंक्शंस मीन्स पनिशमेंट. तो ये हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉजिटिव लॉ के. नंबर 1 है सॉवरेनिटी, नंबर 2 है कमांड, नंबर 3 है ड्यूटी एंड नंबर 4 है सैंक्शन. The Austinian conception of law and analytical positivism has been criticized by jurists. It has been criticized on the following grounds, in which number 1 is that customs are overlooked. Austin's view ignores the significant role of custom in shaping laws. Number 2 is permissive laws are ignored. Austin's theory doesn't account for laws that allow or permit certain actions. Number 3, no place for judge-made law. Austin's conception excludes law created by judges.
Number 4 is international law is treated as morality. Austin doesn't consider international law as a law due to lack of sanctions. Number 5 is overemphasis on command. Critics argue that Austin's theory prioritizes command over the will of people. Number 6 is law and morality relationship ignored. Austin's theory neglects the connection between law and morality. And last is sanctions alone don't ensure obedience. Critics argue that sanctions are not the sole motivator for obeying laws. So this was the positive law and the analytical school of thought. Now let's move toward the scope of historical school of thought. हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट नेम से ही पता चलता है हमारे पास हिस्ट्री की तरफ कहा गया कि हमारे पास एक लॉ की क्या हिस्ट्री है, एक लॉ हमारे पास कैसे एग्जिस्टेंस में आया. हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट कंसर्न्स itself with the scientific study of origin and development of the principles of law. It tells us what the source of a particular principle of law was, where from it was derived, what was its shape and scope in past. It gives more importance to custom. This aspect of jurisprudence has been dealt by Sir Henry Maine in his Ancient Laws. अब हमारे पास हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट के कुछ मेन फीचर्स हैं, जिसमें नंबर 1 है कि लॉ इज़ बॉर्न इन द सोसाइटी एज लैंग्वेज इज़ बॉर्न. लॉ हमारे पास सोसाइटी में एक ऐसे पैदा होती है जैसे कि किसी जगह की कोई लैंग्वेज पैदा हो जाए. सेकेंड हमारे पास है कि लॉ डेवलप्स विद द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के एवोल्यूशन के साथ साथ लॉ भी डेवलप होता है. थर्ड इज़ डिस्ट्रक्शन. लॉ डाइज विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी हमारे पास तबाह होगी तो उसके साथ उसके लॉज भी ख़त्म हो जाएंगे. फिर नंबर 4 है कि कस्टम इज़ द मेन सोर्स ऑफ लॉ. जैसे कि मैंने बताया है कि कस्टम जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट का. So the historical method in jurisprudence should be supplemented by a critical approach based on a philosophy of law in order that a true perspective may be maintained. Now let's move toward the last school of thought, that is ethical school of thought of jurisprudence. Ethical school of thought deals with the law as it ought to be in an ideal state. Ethical jurisprudence aims at bringing the principles of law to such a form in which attainment of justice may best be achieved. एथिकल स्कूल ऑफ थॉट डील करता है कि हमारे पास एक लॉ को कैसा होना चाहिए. The ethical school of jurisprudence believes law should be based on moral principles, promoting justice and rightness. This approach emphasizes law's purpose is to protect people's right, ensure social welfare, and encourage good behavior. So these were the school of thought of jurisprudence. I hope कि आपको समझ आई होगी कि हमारे पास jurisprudence किसे कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है, और स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास कौन कौन से हैं. So thank you very much for your time and attention. Allah Hafiz.